रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के बाद आपका है रिएक्शन विथ वाटर। Here generally metals react with water to form metallic hydroxide and hydrogen gas is released. This is the general principle that, but all metals do not react equally. Some metals which are very reactive react with water vigorously, as for example sodium. So sodium is highly reactive metal, so it reacts even at room temperature. So by this activity you can observe, first you know that metals plus water, metal hydroxide and hydrogen gas is released. All metals do not react equally with water. Sodium is highly reactive and reacts with water vigorously even at room temperature. No need to give or supply heat for completion of this reaction. By this activity you can observe it. Take a beaker. This is your beaker. Fill this beaker with water. Half of the beaker is filled with water. Now cut a piece of sodium and place in this beaker. Place it in the beaker which contains water. Now observe, fast reaction takes place between the water and the sodium metal, and hydrogen gas is released. When the reaction is completed, after some times when you touch the wall of the beaker, you will feel warmth. ये गर्म हो गया, हॉट हो गया. क्यों? एज हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन. इस रिएक्शन के दौरान जब सोडियम और वाटर में रिएक्शन हुआ तो हीट भी रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ. अब हमें क्या करना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो बेसिक बेस है यह एक, इसका जांच करेंगे. तो एक सॉल्यूशन जो बना आफ्टर सम टाइम्स, ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ रह गया? एक्वा सॉल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बन गया. अब वाटर के साथ मिक्स है इसमें. नाउ टेस्ट इट, ऐड और पोर बोथ लिटमस पेपर. red and blue. This turns into blue. यानी red litmus turns into blue when we pour it into the solution which is formed after the reaction. And no effect. Blue पर क्या होगा? No effect in color. कलर में कोई इफेक्ट नहीं हुआ. इसका मतलब ये क्या है? बेसिक सॉल्यूशन है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मेटल्स, लेकिन सभी मेटल्स, कुछ मेटल्स हैं जैसे मैग्नीशियम है, हॉट वाटर के साथ ही रिएक्शन करता है. सोडियम पोटेशियम रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन करता है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है. सोडियम इज हाईली रिएक्टिव. नन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट with water.
Now reaction with acid. Metal plus acid dilute salt plus hydrogen gas. Mostly metals react with dilute acid to release hydrogen gas, and metal salt is formed. This is your metal salt. Metal salt is formed. As for example, magnesium plus hydrochloric magnesium chloride plus hydrogen. Suppose zinc plus dilute sulfuric acid zinc sulfate plus hydrogen. The salt formed, the metallic salt formed by the reaction between metal and acid, it depends upon the nature of the acid. Here sulfate salt is formed as sulfuric acid is taken. Here chloride salt is formed, magnesium chloride, as hydrochloric acid is taken. Nitric acid, nitrate salt. So you will observe that the reaction between metal and the acid, hydrogen gas is released and metallic salt is formed. So in next day you will discuss about the reaction with base and reaction with salt. Thank you.